Tolerance representation. ASME Standard 14.5 M 1994 or ASME Standard 14.5-209 is commonly used in industries to specify the tolerance on engineering drawing. So tolerance can be expressed in several ways like direct limit or as tolerance values applied directly to a dimension, geometric tolerance, nodes referring to the specific conditions, and a general tolerance node in the title block. So here you see the direct limit method, tolerance value, or the geometric tolerance. We will talk about geometric tolerance in module 7-2 part B. So general nodes are given in a nodes or as part of the title block. A general tolerance node would be similar to like all dimensions to be held to plus minus 0.002 inches. Another example, all meted dimensions to be held to plus minus 0.05. All fractional dimensions plus minus 1/64 inches unless otherwise specified, and so on. So these are the some general tolerances method to indicate the tolerances on your drawing. तो आप ड्राइंग के ऊपर टॉलरेंसेस को इन डिफरेंट मेथड्स के थ्रू इंडिकेट कर सकते हैं. सो डिफरेंट टाइप्स की एग्जांपल्स यहाँ पे शो की गई हैं. Types of tolerance. Tolerance dimension can be displayed in several common formats like unilateral, bilateral, or limit dimensions. Here you see the format of tolerance dimension in millimeter and inches. So acceptable and not acceptable types जो है यहाँ पे बताई गई हैं for all these kinds of tolerance types. In the case of unilateral, you can type this way or this way for the metric, and for inches you have to write this way rather than this way. तो इसी तरीके से बायलेटरल इक्वल और अनइक्वल की सूरत में भी यहाँ पे जो पॉसिबल मेथड है एक्सेप्टेबल वो बताए गए हैं और जो एक्सेप्टेबल नहीं है उनको नोट के बाद लिखा गया है. Let's discuss first unilateral tolerance. The term unilateral tolerance means that the total tolerance as related to the basic dimension is in one direction only. For example, if the basic dimension were 1 inches and the tolerance were expressed as 1.000 minus 0.002 or as 1.000 plus 0.002. So these will be the unilateral tolerances because the total tolerance in each is in one direction. So another examples are shown in the figure below. So here is the example related to the millimeter values. यहाँ पे टॉलरेंस जो है आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में बताई गई है अपर की सूरत में, और लोअर डायमेंशन की सूरत में ये 0 है. यहाँ लोअर में है और अपर में 0 है. सिमिलरली यहाँ पे लीनियर डायमेंशन के अंदर अपर के अंदर टॉलरेंस है, लोअर में नहीं है. इन दिस फिगर आपको इंचेस वैल्यू के अंदर यूनिलेटरल टॉलरेंस को लिखने का मेथड बताया गया है. Bilateral tolerance. Bilateral tolerance is a tolerance in which variation is permitted in both directions from the basic size. So partly plus and partly minus. Thus 1.00 plus 0.001 or minus 0.001 is an example of bilateral tolerance because the total tolerance of 0.002 is given in two directions, plus and minus. So the total tolerance can be equally or unequally distributed about the basic size. As shown in the figure, you see the millimeter values and the inches values. तो यहाँ पे जो आपको tolerance दिखाई गई है वो bilateral है, plus minus 0.2 mean 32.02 और 32 minus 0.2 आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास values आ जाएंगी. इसी तरह से यहाँ पे वैल्यू दिखाई गई है प्लस एंड माइनस की सूरत में. तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो ये सब एक्सेप्टेबल मेथड्स है फॉर मिलीमीटर वैल्यूज. सिमिलरली यहाँ पे इंचेस के जो मेथड्स हैं वो भी बताए गए हैं.
जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस माइनस 0.005 और यहाँ पे भी 0.03 0.06। तो ये हमारे पास सब मेथड हैं जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं टॉलरेंस को देने के लिए। तो यहाँ पे आप देखें मिलीमीटर के अंदर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 32 प्लस माइनस 0.2 मीन कि ये 32 के अंदर आपने 0.2 प्लस करना है तो ये 32.2 हो जाएगा, और जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये 31.98 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप इसमें प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे, और आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं limit tolerance. For this method, the high limit or the maximum value is placed above and the low limit or the minimum value is placed below. So when it is expressed in a single line, the row limit precedes the high limit and they are separated by a dash as indicated in figure. तो यहाँ पे आप देखें आपकी अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है। अपर लिमिट जो है मैक्सिमम वैल्यू वो आप अबव लिखेंगे और लो लिमिट जो है वो मिनिमम वैल्यू वो आप बिलो लिखेंगे। और अगर आप इस तरीके से लिखते हैं सिंगल लाइन की सूरत में तो पहले आप लोएस्ट वैल्यू लिखेंगे फिर डैश के बाद आप हाईएस्ट वैल्यू देंगे फॉर टू लिमिट्स द केस, और सिंगल लिमिट की सूरत में आप इस तरीके से लिमिट्स को अप्लाई करेंगे। अनदर सर्कुलर फीचर से रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल दी गई है और फ्लैट फीचर की एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। और इट्स अ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टॉलरेंस मेथड, लिमिट डायमेंशन इन बायलैटरल डायमेंशन और यूनिलैटरल टॉलरेंसेस। तो यहाँ पे आप हर एक के दरमियान डिफरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हमने अभी कवर किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉलरेंस के। Application of tolerance. According to common practice, tolerance are applied in such a way to show the permissible amount of dimensional variation in the direction that is less dangerous. So when a variation in either direction is equally dangerous, a bilateral tolerance should be given. So when a variation in one direction is more dangerous than a variation in another, our unilateral tolerance should be given in the less dangerous direction. तो ये बहुत important points है for assigning the tolerance कि आप किस तरीके से तब bilateral देंगे तब unilateral देंगे, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ आने चाहिए। So on mating surface with few exception the tolerance should be the unilateral. So when tolerance are required on the distance between the holes, usually they should be bilateral as a variation in either direction is normally equally dangerous. So the variation in the distance between the shaft carrying the gears, however, should always be unilateral and plus, otherwise the gear might turn too tight.